everyone, welcome to my YouTube channel Mrinalini Mato. Myself Mrinalini Mato, MCA with UGC NET exam qualified. So today I will explain you UGC NET exam DBMS previous year question November 2020. This question has asked in the November 2020. So first we will see the question. Question number 1. Question number 1. What is given? Match list 1 with list 2. And list 1 has given in the left side ER symbol and list 2 has given in the description. That means in this symbols represent what? Represent what? Next symbols represent what? So this is the meaning of the question. So then you will match it. So whenever you know the tricks and how to solve it, and if you know all the diagrams, all the symbols in the ER model, so then easily you can solve these questions within the 30 seconds. Okay, so first we will see all the symbols and then we will come back to the questions and solve it. See, this ER models topic is data modeling using the entity relationship model. Entity relationship short form is ER model. So summary of the notations for ER diagrams, that is all the symbols and meaning is there. So symbol, that means rectangular box. Rectangular box represent the entity. Single rectangular box represent the entity. Double rectangular box represent weak entity. Diamond shape represent relationship. Double diamond shape represent identifying relationship. Oval shape represent attribute. Double oval shape represent multivalued attributes. Oval shape, another name is eclipse also. So now we will see through the examples. Suppose this is the entity has given entity 1 and this is the relationship in the diamond shape and then has given in the entity 2. Okay, so entity 1 and entity 2 has given, and this entity, whenever single rectangular box within single rectangular box is there, so that means it is called strong entity also. Strong entity also. Okay, and double rectangular box, it represents the weak entity. So entity 1 relationship with entity 2, that means इन दोनों के बीच का क्या relationship है ये बताएगा. Suppose एक टीचर जॉब करती है कहाँ पे? स्कूल में या फिर कॉलेज में. तो मैं एक स्कूल ले ली, तो स्कूल इज द वन एंटिटी, टीचर इज द अनदर एंटिटी. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो टीचर क्या करती है? टीच करती है कहाँ पे? स्कूल में जाकर. तो टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल. Okay, teacher is teaching in the school. So relationship is teaching. That means which work you are doing, that things we will write here in the relationship. And teacher and school दोनों का दोनों क्या है? Strong entity है. Now we will see in the weak entity example. Weak entity example, for example, one parent is there, parent, and relationship is there. This is the son or daughter, or and this is the kid is there. Kid. तो एक parents जो होता है एंड वीक क्या है आपका? किड क्या है? वीक एंटिटी है. तो व्हाई किड इज वीक एंटिटी? बिकॉज kid is totally dependent to parents for the every task, for everything. So that is why kid is the weak entity type. And identifying relation, this is here not relation, it will come in the identifying relations. Why? Because kid को कोई नहीं जानता. kid को किसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? कि उसके पेरेंट्स के थ्रू में वो किसका बच्चा है, किस घर का है. तो किससे डिनोट करते हैं हम? टोटली पेरेंट्स के ऊपर पे. सो दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. Now come attribute. Attribute, that means features of the entity. Features of the entity come in the attribute type. किड के भी कुछ नेम होंगे, उसका एड्रेस होगा, उसका पेरेंट्स का नेम होगा. सो दिस इज द थिंग. सो इन द पेरेंट्स का भी क्या होगा? नेम है, एड्रेस है, आपका फोन नंबर्स है, उसका कुछ यूनिक आईडी कार्ड होगा जिसके थ्रू लोग उस बाहर के लोग जानते हैं. जस्ट लाइक योर आधार कार्ड नंबर्स, फोन नंबर, PAN card number, these things. So multi-valued attribute, this is the best example. This is phone numbers because every person has the 2 to 3 phone number. So phone number is the attribute and his
value, its value is the value. Its value is the more than one value, so that is why it is multi-valued attribute. Now we will see other. In the number 7 has given oval shaped with underline. Oval shaped with underline. So it represents the key attribute. Underlined whenever has given, and you knew that this is the attribute. Oval shaped, that means it is attribute, and underlined has given, that means it is identifying by the key attribute. That means it is the unique value. Unique value. For example, your Aadhaar card numbers, Aadhaar card number, and then your PAN card number, your voter ID card numbers. If any students wants to go school, so that times that students first take to the admission. So whenever his or her is taking the admission, so that times they got the registration number. So every student has their own unique registration number. Now I'm giving in the schools. In the school, suppose I'm taking the standard 5. So standard 5 has the many sections. Section A, section B, section C, so many sections. Suppose 3 sections are there. So in the section A, you knew that roll number 1, roll number 2 to till 50 students are there. Same things in the section B also, same things in the section C also. So how we will recognize it? यहाँ पर भी same है, यहाँ पर भी roll number 1 same है, यहाँ पर भी roll number 1 same है. बट इसके जो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, सबके डिफरेंट होंगे. तो थ्रू द रजिस्ट्रेशन नंबर्स वी विल आइडेंटिफाई. सो रजिस्ट्रेशन नंबर इज द की एट्रीब्यूट. Now come in the composite attribute. Composite attribute, that means एक ऐसा attribute जिसका बहुत सारा सब पार्ट होता है. क्या होता है, सब पार्ट. That means for example your address. Your address has the first street name, and then your city name, your country name, your state name, and then your zip code. Zip code is called in the pin code. Okay, so in the address you can see that so many subpart are there, so it is called in the composite key. And the street name, if you will go, so then in the street name is also the composite attribute. Why? Because in the street name you knew that first your house numbers will come, your road numbers will come, okay, road number, and then your street name will come. If you are staying in the apartment, so then building numbers, building name, everything will come. ओके, एक कॉलोनी में जैसे होता है ये बिल्डिंग का नेम है, वो बिल्डिंग का, तो एवरीथिंग, सो इट विल कम इन द स्ट्रीट नेम. सो स्ट्रीट नेम इज आल्सो द कंपोजिट की एट्रीब्यूट. दिस इज द एड्रेस फील्ड. एंड हो गए कंपोजिट की. अभी मैं आपको बताती हूँ डिराइव्ड एट्रीब्यूट. डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सो दैट मीन्स इन द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स we are deriving from the another attributes. Suppose I want to find out the age of any person. How I want to find out? So if I know the date of birth of that particular person, then easily I can find out the age. So from the date of birth we are deriving the age. So age attribute is the derived attribute, and date of birth, it is the stored attribute. It is called stored attribute. Stored attribute. Okay, why it is called a stored attribute? Because this data is stored in the database. Another example I am giving you. This is the in the one department. एक company है, company में एक department है, department as a attribute है. तो if the department I know that, तो एक department में बहुत सारे employee काम करते हैं, बहुत सारे employee काम करते हैं, तो number of employees if I want to find out, so through the departments, if मैं उसको फाइंड कर पा रही हूँ, तो दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट एंड डिपार्टमेंट इज द स्टोर्ड एट्रीब्यूट. व्हाई इट इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट? बिकॉज इन द डेटाबेस इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड. इट दिस डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड because from there we are finding number of employees. Okay, so this is the derived attribute and stored attribute. आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया. अभी हम लोग देखते हैं क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन. टोटल पार्टिसिपेशन whenever said that, so then through the double line will be there in the entity side. कोई भी साइड में, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जिधर रहेगा, तो दिस इज टोटल पार्टिसिपेटेड बाय द अनदर एंटिटी. सो हियर entity 2 is totally participated in the entity 1. So this is the total participation.
ओके एंड अनदर एग्जांपल नाउ आई रिमेंबर, मुझे अभी सडनली याद आ गया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स का एक अनदर एग्जांपल. If any students are filling the form, any form, your entrance exam form, your college entrance exam form, your higher studies enrollment admission forms, and then any job application form, so that times in the name field you can see that in the name attribute so many subparts are there. Your first name, and then your middle name, and then your last name. Okay, so first names and the checkbox is there. Here you will fill your first name, in the middle name, and your last name. Suppose for example I have, my name is Mrinalini Mathur. What is Mrinalini Mathur? So Mrinalini Mahato has only two words. It is the only two words. So Mrinalini is the first word and Mahato is the last word. I don't have any middle name. So middle name I will be empty. इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी और first name को fill up करूंगी and in the last name को fill up करूंगी. Okay. So now we will see in the other two symbols. So then you can see that entity 1 is given and entity 2 has given within the relationship, and both are the strong entity, and here given the sum value 1 is to n, 1 is to n, that means it is the cardinality ratio. It is called cardinality ratio. Cardinality ratio has four types: 1 to many, 1 to many to 1, 1 to 1, and then many to many, many to many. Four types of cardinality ratios are there, and if this cardinality ratio, it is called degree also, if this cardinality ratio are related with the, connect with the only one relation, this is called binary relationship. It is called binary relationship. Okay, relationship has two types. Relationship has two types: binary and ternary. Ternary. So binary relationship, if any two entities are connected with the one relationship, any two entities, that means two entities are connected with the one relationship, it is called in the binary relationship. For example, this one, it is the examples of the binary relationship. And if in the ternary relationship, so then we need more than two entities plus more than one relationship. More than two entities, more than one relationship. For example, suppose this is entity 1, and then one relationship is there, and then entity 2 is there. Okay, entity 1 and entity 2 are connected with the relationship 1. Now entity 1 connected to the another relation, that is R2, connected to the entity relation 3. Okay, and now entity 2 relation with the relation 3 with the entity 4. Okay, so E2 and E4 are relation with the relation number 3, and now E3 and E4 is also relation with the R4. Okay, so here you can say that so many relationships are there, and in the cardinality ratio doesn't mean that it is 1 is to many, yeah, many to many, otherwise 1 to many, okay, and many to many. Okay, so cardinality ratio कुछ भी रहेगा चलेगा, but one से ज्यादा अगर relation होता है, so this will come in the ternary relationship. Okay, some question has asked already in the exams also, ternary relationship कौन सा डिग्री है, ये binary relationship का क्वेश्चन है या ternary relationship का क्वेश्चन है, and the through the diagram दिया हुआ और आपको पूछा जा रहा है ये binary relationship या ternary relationship है. Okay, तो अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सा binary relation बोलते हैं और किसको ternary relationship बोलते हैं. Now come in the mean and max value. Structural constants mean max on participation of E in R entity in relation. Mean and max value sometimes has given minimum value and maximum value. How you will identify? In the small bracket has given minimum and maximum वैल्यू 4 and 2 दिया रहेगा, जरूरी नहीं है कि 4 and 2 ही दिया रहेगा, हो सकता है आपको 2 and 4 भी दे दे, एनी नंबर सेल्स में. तो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट मिनिमम and second value represent maximum. Okay, so this is the minimum and maximum value. अभी आपको पूरा अच्छा से मैंने बता दिया कि सारे सिंबल्स के बारे में कि कैसे आपको करना है. चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. आप इजीली अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. सी विद इन दी सेकेंड्स, और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी.
तो आप एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले तो डीपली नॉलेज रखना जरूरी है कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए। तो दिस इज द डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट विच वन? वीक एंटिटी। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 2। नाउ ओवल शेप्ड विद द अंडरलाइन, दैट मींस ये किसका है? की एट्रीब्यूट। सो की एट्रीब्यूट, तो की एट्रीब्यूट कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। सो बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नंबर सी डबल ओवल शेप। डबल ओवल शेप दैट मींस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये किसका एग्जांपल था? 4 नंबर्स का। तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सॉरी टोटल पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज आल्सो देयर। एंड देन टोटल पार्ट, डबल लाइन है तो टोटल पार्टिसिपेशन, तो टोटल पार्टिसिपेशन, दिस वन टोटल पार्टिसिपेशन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप। तो डी का क्या हो जाएगा? 4, सॉरी डी का 3। तो आप अभी देखो ए का 2, ए का 2 किस ऑप्शंस में? ए का 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ए का 2, चलिए ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं सबसे पहले। ए का 2 है, ओके चलेगा, हाँ करेक्ट है। बी का 4 नहीं, बी का 4 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ए का 4 नो, फर्स्ट ऑप्शन सी मेरा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी ए का 2 करेक्ट, बी का 1 करेक्ट, सी का 4 करेक्ट एंड डी का 3 करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। नाउ ए का 3 है, ए का 3 है क्या? नो। सो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अभी मैं आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताती हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। व्हेनेवर आपको जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा ER सिंबल से रिलेटेड है और इधर डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो सबसे पहले आप देखो कि फर्स्ट सिंबल्स का क्या आंसर होगा। फर्स्ट सिंबल दैट मीन डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स। डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट द वीक एंटिटी। तो आपको पता चल गया कि ए का 2 आंसर होगा, ए का 2 आंसर होगा कंफर्म। तो ए का 2 जब आंसर होगा तो आप एलिमिनेट करो थ्रू दी ऑप्शंस। आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शंस को आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो? जब आपको सब कुछ पता होगा तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे। डबल जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता ही नहीं है। वीक एंटिटी करता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी करता है, या एट्रीब्यूट को करता है। जो नहीं पढ़ा होगा उसको तो बिल्कुल याद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए, उसको जानिए, उसका शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाइए। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? आप ऑप्शन के थ्रू पे उसको एलिमिनेट करते। तो ए का 2 मुझे पता है आंसर होगा, तो ए का 2 यहाँ पर है। ए का 2 ऑप्शन सी में है, इसमें तो नहीं है, बी में नहीं है, 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो ऑलरेडी मेरा 2 ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी का क्या बोला? 4 बोला है, तो 4 बोला है तो यहाँ पे क्या? ओवल शेप्ड विथ द अंडरलाइन। विद द अंडरलाइन दैट मींस किसको रिप्रेजेंट? की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट कौन सा है? ऑप्शन है। तो बी का मेरा आंसर क्या होगा? 1 है। तो बी का 1 जब आंसर है तो बी का 4 ये तो होगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो विद इन दी 30 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया? मैंने पूरे अच्छे से बता दिए हैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने पूरा लॉन्ग ट्रिक्स भी बता दिए, पूरे सिंबल्स मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। सो अभी वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग ऐसा ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहें, और आप लोग तो सपोर्ट करते ही हो मेरे बिना बोलने से भी। सो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा आप लोग के लिए वीडियो लाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।